Hello kids, welcome to maths class and today we'll do data handling. So the concept we are going to learn in this chapters are primary and secondary data, organization of data, telemarks and frequency, reading and interpretation of pictograph and reading and interpretation of bar graph. So all these concepts we are going to cover in this chapter. Start with the introduction. The collection of the fact that we gather from the which other information are inferred, that is called data. जो भी हम facts से information collect करते हैं वो क्या कहलाता है data. And arranging and representing data systematically, जिससे हम उसको read कर सके and उससे information we can take out information from that is called the data handling. Let us explain with the help of example. A soft drink making company conduct a survey in the school for the favorite drink of student. Following data is collected. So यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स के दे रखे हैं अलग अलग कोका कोला, थम्स अप, मिरांडा, माजा, लिम्का, फ्रूटी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्ड इट. So from the table, we can make the pictograph or the bar graph to represent the data easily. Visualize the following information. Which is the most favorite brand of the soft drink? So most favorite is Thumbs Up. 350 students like Thumbs Up. And which is the least favorite? That is Limca. Only 125 students like Limca. Clear? So by looking at the table, we can easily answer these questions. Next is raw data. The initial step of any survey is to collect data, where data may be in the form of number, figures, facts, symbols. The data is called the raw data. जो हम primary जो data सबसे पहले जो collect करते हैं information, that is called raw data. There are two types of data, primary data and secondary data. Primary data, the data collected directly from the source. हम सीधे source से collect करते हैं तो उसको primary data कहते हैं. Secondary data, where the data is collected from external source like television हो सकता है, newspaper, internet से collect करते हैं, that is known as secondary data. Next is organization of data. Now, how to organize the data? Organization of data means the arranging data in systematic way which help in conclusion. एक ना, हाँ दी. Next is organization of data. So once we gather the information, उसके बाद ज़रूरी है कि उसको हम organize करें. Then only we can read it or we can reach to some conclusion with that data. Organizing the data means arranging the data in a systematic way with the help in conclusion. For example, in class test, the maths student obtained following marks. So ये maths test में students के mark हैं. This data is in raw form. We cannot conclude any meaning from it. इससे हम कोई conclusion नहीं निकाल सकते. So for that we have to arrange the data. So we'll arrange the data in tabular form. Before arranging data in tabular form, we should know about the following terms. Telemarks. It is an easy method to count the number one by one. It is shown as, अगर number 1 है 1 standing line, 2 standing line, for 3 standing line, 4 standing line, 5 4 standing line and 1 slant line जो उसको क्रॉस कर रही हो, that represent 5. 6 के लिए जो हमने 5 है प्लस 1 वो स्टैंडिंग लाइन 7, इस तरीके से 5 and 2 स्टैंडिंग लाइन एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. Frequency is repetition of number in data or the observation occur as many times, means कोई observation कितनी बार आया है, that is its frequency. Here a tabular form of marks. Marks are given here, these are telemarks and number of student. Like marks को हमें अरेंज किया है, the minimum marks are 3 and maximum कितने थे 12. So 3, 4, 5, 6, 9, 10 and 12. How many student got 3 marks? तो अगर हम यहाँ पे अगर डेटा में देखेंगे, फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सो इट वुड बी इजी. सो विल सी 4 times 3 है यहाँ पे डेटा में, सो विल मेक 4 लाइन्स, 4 टेलीमार्क्स, 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 हो जाएंगे. सेम वे हाउ मेनी स्टूडेंट गेट 4 मार्क्स, 5 6 9 10 12, इस तरीके से हम करेंगे. एंड देन अगर हम देखेंगे 13 15 20 जो है मैक्सिमम मार्क है यहाँ पे, तो जो भी हमें टेबल में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट, उसके अकॉर्डिंग हम उसके टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क करेंगे. नाउ इट्स इजी टू गिव द आंसर क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टूडेंट गेट द हाईएस्ट मार्क? हाईएस्ट मार्क्स 20. हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 3? सो आंसर हो जाएगा 3. हाउ मेनी स्टूडेंट गेट 10 मार्क्स? तो हम 10 मार्क्स अगर देखेंगे
तो 3 student got 10 marks. Clear? Next, presentation of data. There are many methods to present the data such as pictograph, bar graph, etc. पहले हम लेते हैं pictograph. Pictograph, the presentation of information or data in the form of picture, that is known as pictograph. Given a pictograph show the sale of laptop by a shopkeeper during 6 days of week. 6 days में कितने लैपटॉप सेल किए हैं उसका हमें यहाँ पे डेटा गिवन है. वन जो पिक्चर है दैट रिप्रेजेंट 5 लैपटॉप. क्लियर? सो संडे यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 पिक्चर है. दैट मीन्स 6 into 5 बिकॉज वन पिक्चर रिप्रेजेंट 5 लैपटॉप. 6 into 5 30 हो जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है डेटा अरेंज कर दिया. नाउ वी कैन रीड दिस pictograph and answer some questions. How many laptops were sold on Thursday? So Thursday we can see 4 into 5, that is 20. Clear? On which day maximum number of laptops were sold? Maximum number of laptops were sold on Wednesday. अगर हम Wednesday देखें तो maximum number of laptops हैं. On which 2 days same number of laptops were sold? Same number of laptop हुए हैं Sunday and Friday. Same number of laptop. How many total laptops were sold during that week? Total during that week. तो हम काउंट कर लेंगे. Sunday like 6 है पिक्चर्स. 6 plus 5 plus 3 plus 7 plus 4 plus 6. जो भी टोटल आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज वन पिक्चर जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रही है. सो दैट इज इक्वल्स टू 155. तो टोटल लैपटॉप कितने हो जाएंगे? 155. Next is evaluation time 14.1. Here the mark obtained by 32 students in maths class test out of 50 marks are given below. So first what we'll do? We'll arrange the data in ascending order. Then हम यहाँ पे marks लिख देंगे, tally marks and number of student. So first we'll start with the minimum. सबसे मिनिमम जो है दैट इज 1. 1 के बाद अगर हम देखेंगे 6 है देन 8 है. तो इस तरीके से सारे मार्क्स को अरेंज कर देंगे. हाउ मेनी टाइम्स 1 कम्स इन दिस डेटा? सो अगर 1 टाइम है तो हम यहाँ पे 1 टैली मार्क लगाएंगे, नंबर स्टूडेंट 1. इसी तरीके से हम सारे जो मार्क्स हैं उनके लिए डेटा अरेंज करेंगे एंड विल मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल. क्लियर? प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट इज बार ग्राफ. Another way of representing data is bar graph. Bar graph is the representation of data in the form of rectangles of equal width. जो भी rectangles होंगे वो equal width के होंगे, इनके बीच का space equal होगा, but height जो होगी that would be different, that would be according to data. These bars can be horizontal, vertical with the equal spacing among them. Vertical भी हो सकते हैं, horizontal भी हो सकते हैं, and जो उनके बीच का space होगा that would be equal. It is an easy method to analyzing given data in the short time and help to understand the given data in proper way. Example लेते हैं. Read the bar graph, the figure carefully. Here a bar graph is given. So on horizontal axis, 2 axes होते हैं. Horizontal axis पे we can see classes are given here. And vertical axis we can see number of girls in the classes are given here. Scale, हर एक बार ग्राफ की स्केल होगी. Here scale on y axis, this axis, vertical axis 1 centimeter that is equals to 20 girl. तो 20 का जो है डिफरेंस है 1 centimeter पे. 0, 20, 40, 60 and according to given data will draw the bar graph. Now we have to answer some question. In which class number of girls is maximum? So number of girls we can see is maximum in class 2. In which class number of girls is minimum? Minimum girls are in class 5. How many more girls are there in class 4 then class 5? So हमें difference निकालना है. 100 minus 70 that is 30. 30 more girls are in class 4 than 5. What is the total number of girls in 5 classes? Total number 80 plus 120 plus 90 plus 100 plus 70. Total 460. So easily हम bar graph को देख के we can answer these questions. Practice all the examples. Next is evaluation time 14.2. The following bar graph show the sale of t-shirt in the ready-made shop during the April to August. So on horizontal axis we have taken the month, vertical axis we have taken the number of t-shirt. Now observe the above bar graph carefully and answer the following question. Next is
So next we have to answer the question, in which month maximum number of t-shirt was sold. So maximum t-shirt number of t-shirt was sold in June. हम देख रहे हैं जो हाइट है सबसे ज़्यादा बार की वो कब है, जून की. So maximum number of t-shirt was sold in June. Clear? So इसी तरीके से आपको जो बार ग्राफ है उसको देख के इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. अनदर वे टू रिप्रेजेंट द डेटा that is using pie chart or circle graph is shown the relationship between the whole and its part. Center angle जो होगा component का वो क्या होगा, value of component upon sum of the value of all component multiply by 360 degree. Example समझते हैं हम. The pie chart gives the mark score in an examination by the student in different subject. If the total marks obtained is 540, answer the following question. In which subject did the student score 105 marks? Next question, how many more marks were obtained by the student in mathematics than Hindi? So here you can see the marks are represented in pie chart. So first question, सबसे पहले हम क्या करेंगे, central angle निकालेंगे. For 540 marks, central angle is 360 degree. तो first जो हमारा central angle निकलेगा, that is 360 upon 540. Now अगर मार्क्स 105 है तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 540 जो टोटल मार्क्स है इंटू 105, दैट इज 70 डिग्री. हैंस द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी. 70 डिग्री हमारा किस में था, हिंदी में. तो 105 जो मार्क्स स्कोर किए वो हिंदी में किए हैं. क्लियर? नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है फॉर 540. फॉर 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 540 अपन 360. तो अगर 90 डिग्री किसके लिए होगा, 540 इंटू 360 इंटू 90, 135 मार्क्स. 135 मार्क्स अगर हम देखें तो किस में है, 90 डिग्री का एंगल, दैट इज इन मैथमेटिक्स. क्लियर? तो इस तरीके से हमें आंसर करना है. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइम 14.3. ड्रॉ द पाई चार्ट ऑफ द गिवन डेटा. हियर द फेवरेट फूड एंड नंबर ऑफ पीपल गिवन हियर. So first we'll find out total number of people. 30 plus 40 plus 25 plus 25. 50 plus 40, 90, 19 and 30, 120. So central angle जो हो जाएगा, that is equals to 360 upon 120. Now for North Indian, 60 degree. So what you will do? First you will draw a circle and this is the center, draw a radius. Here you will make a 60 degree angle. यहाँ पे रख के एक 60 degree का angle बनाएंगे. So that is for North Indian food, 60 degree. Then South Indian angle हो जाएगा 360 upon 120 multiplied by 40, 120 डिग्री. क्लियर? सो यहाँ पे आप रखेंगे एंड 120 का एंगल बनाएंगे. सो दैट इज फॉर साउथ इंडियन. देन चाइनीज एंड अदर्स 25 25 है, एंगल कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 120 इंटू 25, 75 and 75. तो 75 डिग्री का आप एंगल बना देंगे. दैट विल रिप्रेजेंट चाइनीज एंड अदर्स. क्लियर? सो दिस वे यू विल ड्रॉ द पाई चार्ट. Practice all the question. Next is chance and probability. Chance and probability are very common words that we use in our daily life, such that there is no chance of rain today. It is quite probable that India will win the World Cup. हो सकता है जीते और नहीं भी हो सकता है. There are no chance to coming first for me in the class, etc. So here all the situation is showing us probability. The thing may be occur or may not be. Probability means possibility of being an event. In mathematical language, probability is the quantitative measurement of happening an event, possible outcome or the sample space. Tossing a coin. When we toss a coin, then its upper face will show either head or tail. अगर हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. इट इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन, मीन्स दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है. सो पॉसिबल आउटकम ऑफ थ्रोइंग कॉइन्स आर 2, हेड एंड टेल. Throwing the dice, there
अ डाइस रोल, तो 6 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. Experiment, an operation which can define outcome is called the experiment. Each outcome is called the event. Probability of occurring an event, that is equals to number of outcomes in which the event occurred divided by total number of possible outcome. Probabilities in event cannot less than 0 and cannot more than 1. Probability of the sure event is 1 and impossible event is 0. Example लेते हैं. A die is thrown once. Find the probability of getting the odd number on it. So total possible outcome कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. 1 से 6 तक number. Number of favorable outcome because हमें odd numbers. So it could be 1, 3 और 5. तो 3 हो जाएंगे. So probability कितनी हो जाएगी? 3/6. That is 1/2. So getting the odd numbers. Next is evolution time 14.4. The coin is tossed. Find the probability of getting tail or coin on the coin. सो पॉसिबल आउटकम हो सकता है, टेल हो सकता है और हेड हो सकता है. फॉर टेल तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? टोटल आउटकम 2. टेल का चांसेस कितना हो सकता है? 1. सो पॉसिबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू 1/2. क्लियर? प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट इज लुक बैक. The collection of the fact that we gather to get some information, that is called data. Primary data is the data which is collected directly from the source. Secondary data is the data which is collected from the external source like newspaper, internet, etc. Any observation occurring as many times as in the data, that is called frequency. Pictograph is the presentation of information with the help of pictures. A bar graph is the presentation of data in the form of rectangle of equal width by the varying heights due to different data. Data can also be present using the pie chart. Circle graph, it shows the relationship between the whole and its part. Probability means the possibility of being an event. In mathematical language, probability is the quantitative measurement of the happening an event. Next is, let's recall. So practice all these questions. ये सारे questions आपको practice करने हैं. Next is mental zone. When data is in the original form, it is called raw data. Next, multiple choice question. If 1 box that is equals to 5 box, then 4 box कितने हो जाएंगे? 5 into 4, 20. So B is the correct option here. Here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया. Now to practice it.